Hello students. Today I will be talking about nucleotide metabolism, which is basically about the synthesis and breakdown of nucleotides. And we know that nucleotides, they are basically known. What are nucleotides? These are basically known for their role as monomers of nucleic acids. Okay, so these are the basic building blocks of nucleic acids, DNA and RNA. And this is the general structure of a nucleotide. So nucleotide that is made up of a base, a nitrogen base, which is a purine or a pyrimidine, which is attached to a ribose unit through a glycosidic bond, and ribose is further attached to phosphate group through a ester bond. So this is a basic structure of a nucleotide. So this table shows the nomenclature of bases, nucleosides, and nucleotides. Okay, so bases we know that adenine, guanine, uracil, cytosine, these are the bases of RNA, and adenine, guanine, thymine, and cytosine, these are the bases of DNA. And nucleosides, you know that nucleosides are basically bases attached to a ribose unit. Then these are nucleosides, and when the nucleosides are attached to a phosphate group, a monophosphate group, then these are called mono, di, or triphosphate group. Then these are called nucleotides. So for RNA, we have ribonucleosides, and the nomenclature for ribonucleosides is that adenine के लिए adenosine, guanine के लिए guanosine, uracil के लिए uridine, cytosine के लिए cytidine. These are the ribonucleosides, and similarly adenylate, guanylate, uridylate, and cytidylate. These are the ribonucleotides. So similarly for DNA में आपको पता है that the bases are attached to a deoxyribose unit. ठीक है, तो ribose sugar के second prime position पे oxygen is not there. ठीक है, that is deoxygenated. So when bases are attached to deoxygenated ribose unit, ठीक है, then these are deoxyribonucleosides, and so we have deoxyadenosine, deoxyguanosine, thymidine, and deoxycytidine. So these are ribonucleosides, and similarly for deoxyribonucleotides we have deoxyadenylate, deoxyguanylate, thymidylate, and deoxycytidylate. So this is basically the nomenclature of the bases and nucleosides and nucleotides. So you all must go through these. Now let us have a look on the functions of nucleotides in body. Okay, so we know that nucleotides, they are basic building blocks of nucleic acids. So एक function तो उसका पता है, लेकिन इसके और भी कई functions होते हैं, तो वो भी एक बार discuss कर लेते हैं. So these are the activated precursors of nucleic acids that we know. So basically the NTPs, nucleotide triphosphates, these are the activated precursors of nucleic acids. Okay, so this is one. Then other is ATP is the universal currency of energy. तो ये हमको पहले से ही पता है, हमने डिस्कस किया है कि ATP जो है, ATP is a nucleotide and it is a universal currency of energy. उसके अलावा UTP glucose, that is a activated precursor for glycogen biosynthesis. ठीक है, so this is one function. Then nucleotides, they are essential components of signal transduction pathways also. So you know that cyclic AMP and cyclic GMP, these are the second messengers that transmit signals. So these are the general functions of nucleotides in our body. Okay. Now let us have a look on the biosynthesis of nucleotides. So nucleotides, they can be synthesized by de novo or salvage pathways. तो दो तरह की pathways हैं जिनसे nucleotide synthesize होते हैं, de novo pathway and salvage pathway. दोनों ही pathways से nucleotide synthesize होते हैं. So तो de novo क्या है? De novo means from the scratch, यानी कि एकदम शुरुआत से. So in de novo synthesis, nucleotide bases are assembled from simple compounds. उसमें simple compounds से nucleotide bases form होते हैं from the scratch. Then salvage pathways, salvage का मतलब होता है rescue, and in salvage pathways preformed bases
are recovered and reconnected to a ribose unit. तो पहले से ही bases होती हैं, they are recovered and reconnected to ribose unit. ठीक है, तो जो भी डिग्रेडेशन होती है न्यूक्लिक एसिड्स की या कोई ऐसे कंपाउंड जिनमें बेसिस प्रेजेंट हो, तो जब उनका डिग्रेडेशन होना होता है तो these bases are recovered from them और फिर वहां से these are reconnected to the ribose unit to form nucleotides. ठीक है, so there are two ways. नाउ ये इसको सिंपल वे में समझाने के लिए है दिस फिगर. साल्वेज पाथवे में क्या होता है, बेस जो है दैट इज अटैच्ड टू राइबोज यूनिट टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स, द pyrimidine और purine bases. ठीक है, जो ऑलरेडी होती है दे गेट अटैच्ड टू राइबोज यूनिट टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स. और इन डी नोवो पाथवेज सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं, they react with each other in multiple reactions to form nucleotides. ठीक है, तो ये दो पाथवेज हैं. इसके अलावा अच्छा अब क्या है कि इन डी नोवो पाथवेज, तो हम लोग डी नोवो पाथवेज को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम साल्वेज पाथवे डिस्कस करेंगे. तो इन डी नोवो पाथवेज the framework for a pyrimidine base is assembled first and then attached to ribose. तो डी नोवो पाथवेज में क्या होता है, सबसे पहले pyrimidine base का फ्रेमवर्क तैयार होता है. इन केस ऑफ pyrimidine, जहाँ पे pyrimidine base containing nucleotides होते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि pyrimidine का पहले फ्रेमवर्क तैयार होता है, उसके बाद that ring जो फॉर्म होता है that is attached to ribose. ठीक है, so this can be better understood by this figure. ठीक है, तो इसमें क्या है कि pyrimidine रिंग फॉर्मेशन हो रहा है. इसमें तो बेसिक उसमें मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट, अमोनिया. ठीक है, उससे कार्बोमाइल फॉस्फेट इज फॉर्म्ड and in this reaction 2 ATP molecules are consumed. Then aspartate is added. ठीक है, to form pyrimidine ring. तो इसमें क्या है कि N3 और C2 comes from carbamyl phosphate and the rest of the atoms come from aspartate. ठीक है, तो सबसे पहले ये pyrimidine ring फॉर्म होती है, उसके बाद this pyrimidine ring is attached to ribose unit. ठीक है, राइबोस फॉस्फेट यूनिट के साथ अटैच्ड होता है. उससे फिर पहले यूएमपी बनता है, यूएमपी के बाद फिर यूटीपी बनता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं. ठीक है, तो सो ये पाथवे है. देन इन कंट्रास्ट टू दैट द फ्रेमवर्क फॉर अ प्यूरीन बेस, अगर प्यूरीन बेस है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, तो द फ्रेमवर्क फॉर अ प्यूरीन बेस इज सिंथेसाइज्ड पीस बाय पीस डायरेक्टली onto a ribose based structure. ठीक है, तो राइबोस बेस स्ट्रक्चर होता है, तो पहले से ही राइबोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहता है, उसके ऊपर एक एक करके एटम्स लगते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और एक प्यूरीन रिंग जो है फॉर्म होती है. सो राइबोस बेस रहता है, राइबोस बेस के ऊपर प्यूरीन रिंग फॉर्म होती है. ठीक है, तो ये बहुत लंबे रिएक्शंस होते हैं, आई गेस 11 रिएक्शंस इसमें होते हैं टू फॉर्म प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, तो ये बेसिक था बताने के लिए. इसके बाद now let us discuss de novo synthesis of pyrimidine bases in detail. तो अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं de novo synthesis of pyrimidine bases first. तो उसमें क्या है, the first step in the de novo pyrimidine biosynthesis is the synthesis of carbamyl phosphate from bicarbonate and ammonia in a multi-step process requiring a cleavage of two molecules of ATP. ठीक है, and this reaction is catalyzed by carbamyl phosphate synthetase. तो इसमें क्या है, bicarbonate anion reacts with ammonia to form carbamyl phosphate and the cleavage of ATP molecules का hydrolysis जो है वो इसमें required होता है. तो इसमें क्या होता है, so bicarbonate is phosphorylated by ATP to form carboxyphosphate. Then ammonia reacts with carboxyphosphate to form carbamic acid. Then carbamic acid is again phosphorylated by ATP to form carbamyl phosphate. Okay, so this is a reaction which is catalyzed by carbamyl phosphate synthetase. So carbamyl phosphate synthetase, this is
This also catalyzes the first step of a urea cycle. Okay, urea cycle में भी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट. तो सेम यही रिएक्शन जो होता है ये यूरिया साइकिल में भी होता है. ठीक है, तो उसमें भी कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज ही यूज होता है. पर उसमें वो जो ये दोनों के दोनों जो एंजाइम्स हैं, ये इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है और जो उस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है. ठीक है, दोनों ही एंजाइम को कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज कहते हैं, पर उसको कहते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 और इसे कहते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2. ठीक है, दोनों के दोनों आइसो एंजाइम्स हैं, डिस्टिंक्ट एंजाइम्स हैं. तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो ये अमोनिया है, कुछ तो जो डिजॉल्व्ड अमोनिया प्रेजेंट होता है बहुत कम अमाउंट में होता है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन. लेकिन ज्यादातर ग्लूटामीन का जो साइड चेन है उससे ये अमोनिया जनरेट होता है. ठीक है, तो ये जो अमोनिया यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, दैट इज greatly being generated from the hydrolysis of the side chain of glutamine. So glutamine, the side chain of glutamine is the main source of ammonia which is being used here. So let us have a look on the structure of carbamyl phosphate synthetase. So this is a secondary structure of the enzyme, and this is one enzyme which carries the active site for three reactions. So it has three catalytic sites. The one which catalyzes hydrolysis of glutamine, and the second one in blue color which catalyzes phosphorylation of bicarbonate anion, and the third one which carries out phosphorylation of carbamic acid. So we have three catalytic sites in one enzyme, and this enzyme consists of two chains, the one in yellow color. So the yellow color chain carries catalytic site for glutamine hydrolysis, and then there is white chain which carries two ATP grass domain. Okay, so two ATP grass domain, one in blue and one in red color. So these are two ATP grass domain which carries out phosphorylation reactions by ATP molecule. Okay, so you see we have one enzyme carrying out three different reactions. So the question here is that we can have different enzymes because there are three different reactions. So we can have different enzymes carrying out different reactions. And why do we have one enzyme carrying out three reactions, three different reactions? So there's a reason to that. So let's understand that. So in this enzyme, substrate channeling happen. So you can see a substrate channel within the enzyme. So through this channel, intermediates pass from one side to another side. So you can see that at the start of the channel, glutamine enters here to get hydrolyzed so that ammonia is released. So ammonia being released here move a little ahead to this site where it reacts with the carboxyphosphate intermediate, then to form carbamic acid. Then the carbamic acid move a little ahead to this site in order to get phosphorylated to form carbamyl phosphate, and you can see the red color molecule. This is carbamyl phosphate in order to it release from the enzyme. So you can see substrate channeling happens in this enzyme. And so what are the advantages of substrate channeling? The substrate channeling serves two roles. First is that the intermediate generated at one active site are captured with no loss caused by diffusion. Okay, so the intermediate which is formed doesn't get lost due to diffusion. So when it is produced, it is there within the enzyme only near the active site. So the intermediates generated, they are captured with no loss caused by diffusion. So, and the other thing is that labile intermediates are protected from
hydroxylation or decomposition. So labile intermediates, when once produced, they are not decomposed. As we can see that the carboxyphosphate and carbamate molecules which are formed during these reactions, these are highly labile, and they can be decomposed even within 1 second of the reaction. So this becomes very easy for the enzyme to carry out these reactions because of the substrate channeling, because of one enzyme having multiple catalytic sites. So you will come across with these kinds of enzymes having multiple catalytic sites and showing substrate channeling in metabolism of other biomolecules also. And one example is uh, tryptophan synthetase enzyme that also displays the same kind of characteristic, having multiple catalytic sites and substrate channeling. And other examples you will find while studying metabolism of other biomolecules. So तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा that जो enzyme है carbamoyl phosphate synthetase 1, it carries three catalytic sites for carrying out three reactions, और एक ही एंजाइम है, इसमें मल्टीपल कैटालिटिक साइट्स हैं, अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं. और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि जो भी अंदर इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे हैं, जो भी अंदर इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो एंजाइम को छोड़ के बाहर ना जाए, उनका डिफ्यूजन ना हो, कहीं बाहर निकल के ना चले जाए, क्योंकि ये जो पाथवे हो रही है, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि सबस्ट्रेट या आपके जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे हैं वो निकल के बाहर कहीं डिफ्यूज आउट हो जाए. ठीक है, तो वो डिफ्यूजन को रोकता है. ठीक है, लॉस ऑफ इंटरमीडिएट्स को रोकता है. और दूसरी बात ये है कि जो इंटरमीडिएट्स बहुत ज्यादा लबाइल होते हैं, जो बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं, तो वो जैसे ही अंदर फॉर्म हो गए वैसे ही वो रेडिली दे विल बी कंज्यूम्ड इन अनदर रिएक्शन. ठीक है, दूसरे रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होके उनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या जो भी फर्दर इंटरमीडिएट है वो बनेगा, तो उनका डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस प्रोसेस है. ठीक है, सेटअप है. तो इस तरह का सेटअप आपको मेटाबॉलिज्म में और भी कई जगह पे मिलेगा. जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम आल्सो डिस्प्लेज द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी. तो अब कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया है. नेक्स्ट इज दैट द aspartate amino acid aspartate reacts with carbamyl phosphate to form carbamyl aspartate. Then carbamyl aspartate readily cyclizes to form dihydroorotate. So carbamyl aspartate then get reduced to form dihydroorotate, and this is a cyclic ring. And this dihydroorotate then gets oxidized by NAD to form orotate. So this is the first pyrimidine ring just formed. So this reaction where aspartate combines with carbamyl phosphate to form carbamyl aspartate is catalyzed by aspartate transcarbamylase, and then the other two reactions are catalyzed by dihydroorotase enzyme. So in mammals, the first three enzymes of the pathway, the carbamyl phosphate synthetase 2, aspartate transcarbamylase, and dihydroorotase. All three enzymes are located on the same polypeptide designated as CAT. ठीक है, तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसी में ये तीनों एंजाइम एक्टिविटीज हैं. तीनों ही एंजाइम जो है वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में लोकेटेड हैं. ठीक है, तो टुगेदर दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड CAT. ठीक है, C for CPS, A for aspartate transcarbamylase and D for dihydroorotase. ठीक है, उसके बाद जो लास्ट के दो और एंजाइम्स इसमें है, they are located on the same polypeptide chain, and that polypeptide chain is called UMP synthase, जिसपे दो एंजाइम एक्टिविटीज हैं, ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंड ओरोटिडाइलिक एसिड
कार्बोक्सिलेज, ये दोनों एक्टिविटीज उसमें होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. So next is the coupling of orotate with the ribose unit. नेक्स्ट कपलिंग होती है जो ओरोटेड है, pyrimidine ring है that is formed, that has been formed. अगला जो स्टेप होगा वो होगा कपलिंग ऑफ दिस ओरोटेट विद द राइबोस यूनिट. ठीक है, तो उसमें क्या है, द ओरोटेट देन रिएक्ट्स विद द 5 फॉस्फोराइबोसल 1 पायरोफॉस्फेट, तो पीआरपीपी जनरली कहते हैं. तो ओरोटेट जो है दैट रिएक्ट्स विद पीआरपीपी विद द रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट ग्रुप forming orotidylate. So this is the first pyrimidine nucleotide which is formed by the de novo synthesis. So अभी next reaction में क्या है, this orotidylate then gets reduced and decarboxylated to form uridylate. ठीक है, this uridylate is nothing but UMP. Now उसके बाद फिर UMP से फिर UDP फॉर्म होगा एंड इसमें ATP would be hydrolyzed for this reaction. तो पहले UDP फॉर्म होगा, उसके बाद फिर UTP फॉर्म होगा. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट्स और ट्राइफॉस्फेट्स हैं, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं बाय द एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज. तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज एंजाइम्स होते हैं जो यूज होते हैं इन द इंटर कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट्स एंड ट्राइफॉस्फेट्स. ठीक है, सो इसमें एक्स और वाई जो है दे रिप्रेजेंट सेवरल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स. ओके, सो इसमें एक्सटीपी, अगर यूडीपी देखें, यूडीपी जो है that reacts with suppose ATP to form UTP and ADP. ठीक है, तो इसी तरह का फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस होता है, आपस में इंटर कन्वर्जन होता है. तो सबसे पहले क्या होता है कि UMP फॉर्म होता है, UMP UDP में कन्वर्ट होता है और फिर देन UDP गेट्स कन्वर्टेड इनटू UTP. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अब जो CTP है दैट इज फॉर्म बाय बेसिकली एमिडेशन ऑफ UTP. ठीक है, CTP जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय एमिनेशन ऑफ UTP मॉलिक्यूल्स. तो इसमें ग्लूटामीन का जो साइड चेन अमाइनो ग्रुप है दैट इज used here for amination reaction and UTP gets this ammonia to form CTP. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है यूरेसिल रिंग का दैट इज एमिनेटेड टू ammonia. ठीक है, तो इसमें ये 1 ATP molecule is used here, hydrolyzed for this carrying out this reaction. ठीक है, तो इस तरह से ये UMP फॉर्म हुआ, UMP से UDP बना, UDP से UTP बना, UTP से फिर CTP बनता है. ठीक है, UMP से सीधा साइटोसिन नहीं बनेगा, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड नहीं फॉर्म होगा, वो UTP पहले बनके फिर होगा. So UTP, CTP is formed by the de novo biosynthesis pathway. They can be further used for RNA biosynthesis. So you can see this is the overall pathway of pyrimidine nucleotide biosynthesis by de novo pathways. So you can see the overview. You can see that the first reaction that is catalyzed by carbamyl phosphate synthetase 2, where carbamyl phosphate is formed. So these are 3 reactions basically. So then the aspartate joins carbamyl phosphate and the orotate forms, and orotate then reacts with PRPP and then decarboxylated to form in 2 reactions to form UMP. Then UMP gets converted to UDP, UDP gets converted to UTP, UTP then gets converted, so that UTP then forms CTP. So these are used for RNA biosynthesis, and other nucleotides are also formed. So this is overview of the pathway. I've taken this picture from Mark's Basic Medical Biochemistry, which is also a very, very good book. And if you want, I can share the copy with you people. And this is all for today. Next, we will discuss biosynthesis of purine bases and salvage pathways. So thank you and goodbye.